Right now, this is our third question. Um, let's create a new Python file for this one. Question 3. A file is created as always. We're going to check it that the compiler is working or not. It is working perfectly. All right, we don't need it, so let's get rid of it. So this is now the same paper, May June 2021, variant 4.1, and we are now on question number 3. All right, so for this question, what we have to do is to go for the object-oriented programming, and they are asking for a computer game requires user to travel around the world to find an open treasure chest. So each treasure chest has the mathematical question inside. The user enters the answer. The number of points awarded depend on the number of attempts before the user gives the correct answer. So it's a sort of a guessing thing. They are asking for that we need to go for the object-oriented programming. The following class diagram describe the treasure chest. And mind it कि हमारे पास treasure chest के नाम से यहाँ already एक file given है जो कि इन्होंने दी हुई होती है. And then what is inside this file? This is the data inside it. All right, what we need to do is to go through with these things. The question, it should be a string, answer, integer, point, integer, and store the question, store the answer, and they store the maximum possible numbers of the points available for this chest. Then we have a constructor, which we are going to use. Take question, answer, and point as a parameter and create an instance for an object. Get question, return the question. Check answer. This is take the user's answer as a parameter and returns true if it is correct. Otherwise, it will provide false. Get points, take the number of attempts as a parameter and return the number of point awarded. Now what we have to do is to create a new program, and the program is what we have to do into the program. We're going to write code to declare the class treasure chest. Do not write any other methods. The attributes are private. If you are using the Python programming language, include the attribute declaration using the command. All right. So this line is like important for the people who are working on Python like us. And what we have to do is to just create the class for the treasure chest. Although it's a quite very simpler one, treasure chest के नाम से हमें क्लास को क्रिएट करना था जिसके अंदर ऑब्वियसली हमने क्वेश्चन आंसर एंड द पॉइंट्स इनको हमने इंक्लूड करना है यानी यूज करना है बेसिकली. बट जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें डिक्लेरेशन का मेथड है, इसमें डिक्लेरेशन का मेथड नहीं है. बट इनके इस पॉइंट से the using the programming language, the Python programming include attribute declaration using command. So ये बताएं, ये चाहते हैं हमसे कि हम बताएं कि भाई ये हमने यूज किया. So what we are doing over here, at this particular stage हम लिखना शुरू कर रहे हैं कि जी क्लास कैसे बनती है. और क्लास बनाने के लिए तो बहुत सिंपल है. जितनी भी जगह पे क्लास बनी है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें यूजुअली क्लास का वर्ड यूज होता है. So class and the name, let me copy it from here, treasure chest.
मैं एक चीज इसमें देख रहा हूँ, चलें let's go for it, let's create it। मैं सिर्फ नाम देख रहा था बिकॉज पाइथन यूजुअली में हम जब भी काम कर रहे होते थे तो हमारी तरीका था कि पहला कैरेक्टर स्मॉल में लिखते थे, लेकिन जो क्वेश्चन में है उसमें हर जगह पे टी कैपिटल में। पेज जस्ट क्रिएट हो गया एंड वी आर ऑन इट। द प्रॉब्लम है कि इसने कहा है कि सबको कमेंट करें, तो कमेंट करके हम बता देते हैं। इट्स अ प्राइवेट थिंग। क्वेश्चन था और एज ए स्ट्रिंग इसको चाहता था, क्वेश्चन को एज ए स्ट्रिंग, आंसर को इंटीजर, पॉइंट को इंटीजर। So we are making the other one. Private. Answer as far as कि मेरे पास ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये कमेंट्स डाल रहा हूँ, so मैं कैपिटल स्मॉल का कोई ख्याल रखूँ ना रखूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Private point star. This is the one which we are creating. Okay, this is the part their requirement was the programming something different. In the programming, obviously, what we are creating is the depth. तरीका हमें पता है। सेल्फ को कॉल किया, अच्छा क्योंकि एज ए पैरामीटर हम कॉल कर रहे हैं और तो इस वक्त हम इसके साथ एक वर्ड यूज कर रहे हैं, पी ऐड कर दिया हमने सिंपली। इसी तरह आंसर को कॉल कर रहे हैं एज ए पैरामीटर और पॉइंट स्मॉल करते हैं, पॉइंट्स को एज ए पी हमने क्रिएट कर दिया। और आई थिंक कि इसने बात को समझा नहीं अच्छा सा। लास्ट हमने बिल्कुल सही से क्रिएट किया हुआ था, INIT किया, सेल्फ किया, कॉमा लगाया, क्वेश्चन पी, आंसर पी, पॉइंट एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट इसकी समझ में बात आई नहीं। चले कोई बात नहीं। सेल्फ डॉट क्वेश्चन में चला जाए, क्वेश्चन पी, आई थिंक स्टिल हमें ट्रबल है। हम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। इसने कुछ वार्निंग भी देना शुरू की थी यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ की वार्निंग देखेंगे कि इधर क्या चाहता था ये। चल डॉट द सेकंड वन, आंसर, इससे पहले भी तो अंडरस्कोर चाहिए थे। इक्वल्स टू आंसर पी,
भी कैपिटल लिखा हुआ, ऊपर भी कैपिटल लिखा था। self dot underscore underscore points and equals to points 3. ये हमने काम तो खत्म कर लिया है, but still we have some sort of an issue. इसको यहाँ हमसे क्या इशू हुआ, that is what we have to find it out. मैं एक दफा रन करूँ ताकि इसको कोई परेशानी है तो बदल जाए. इनवैलिड सिंटैक्स है, वो कहता है कि ये आपने जो क्लोज किया, कॉलन लगाया, that's somewhat invalid. लगाया था. Okay, good here. Right, everything is fine now. There should be a space in between. And मैंने दोबारा run किया, it's working. So what we have to do is to obviously we are going to place this particular one into our evidence document, which is over here. We'll try to do one more thing. Which is next time once we are writing it, so हम यहाँ पे अपनी कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन का नंबर भी डाल दो कि ये क्वेश्चन पार्ट कौन सा है. प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ से हम इसको नीचे ही ले आते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है सही जगह से शुरू हो जाए. ऑलराइट, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, which is अच्छा खासा है ये काम. तो चलें इसको शुरू करते हैं. ये कह रहे हैं कि द फाइल द टेक्स्ट ट्रेजर चेस्ट डेटा, ये हमारे पास मौजूद है बिल्कुल. और इस ट्रेजर चेस्ट डेटा की जो फाइल है इसको हमने यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर. Alright, so what we have to do is to probably open it, store data for 5 questions in the order of the question answer points. So हमने देखा तो था उसको. For example, the first 3 lines of the file are for the first question. 2 multiplied by 2 question, answer is 4 points. How many? 10. So ये मैथमेटिकल क्वेश्चन उन्होंने कहते हैं और ये बहुत सिंपल से आसान से मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं. एक दफा फिर देख लेते हैं. Which means that these 3 lines 1, 2 and 3 is for first question. Again 1, 2 and 3 is for second, and so on. Up the right program code for the pseudocode, for procedure. Read data to read each question answer and point from the text file. ठीक है, line by line हम उसको पढ़ रहे हैं. Create an object of type treasure chest. For each question, declare an array name, array treasure of type treasure chest. Append each object in an array and use exception handling to output an appropriate message if the file is not found.
we need to save it as an evidence in the evidence document. All right. For this, what we have to do is to write straight away question from here. कोई और चीज तो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. Right. ठीक है जी. Now what we are doing, हमने डायरेक्टली एक टैप कर लिया है. रीड डेटा के नाम से उसने कहा था कि एक आप प्रोसीजर बना दें, हम बना देते हैं. और एक हमारा पुराना तरीका है, पेपर 2 में भी हमने इसको यूज किया था कि हम जब फाइल को रीड करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसका बार बार नाम लिखने के बजाय उसका नाम ही किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर. फाइल, मैंने इसका नाम रखा फाइल नेम इक्वल्स टू, द फाइल नेम वाज ट्रेजर चेस डेटा, ये वाला. ठीक है. सो मैंने इस पूरे का नाम उठाया, कॉपी किया और इसमें बीच में डाल दिया. ट्रेजर चेस डेटा, कोई भी मिस्टेक ना हो ताकि हमने इसको कर दिया यहाँ पे कॉपी पेस्ट. ओके, एंटर करते हैं. एंड वी आर नाउ ट्राई किया. ट्राई करने के बाद हमने आगे बढ़े. फाइल इक्वल्स टू, अभी तक क्योंकि इसका कलर आप देख रहे हैं डेमो हुआ है, अब जब हम ओपन करेंगे तो जरा फर्क पड़ जाएगा. ओपन है, फाइल नेम के नाम, फाइल नेम के नाम से वेरिएबल है मेरा. अब ये देखें इसकी शक्ल बेहतर हो गई. और उसके साथ हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कर रहे हैं रीड की एक्टिविटी. सो हमने रीड बता दिया इसको. सेकेंड, हम एक और सॉर्ट ऑफ वेरिएबल ले रहे हैं, डेटा फैच्ड के नाम से, और इसी के अंदर फाइल में से डेटा रीड लाइन करवा रहे हैं. डॉट स्क्रिप्ट. ऑब्वियसली जब इसको यूज करेंगे तब ये बेहतर हो जाएगा. वाइल जरा ख्याल रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए. fetched, yes, is not equals to like blank then क्या करें हम, question equals to डेटा फैच करवा देते हैं. and answer equals to file dot read line
as you can see, same process हम almost कर रहे हैं, तो points के साथ भी file dot read line dot step करवाया, that's it. Alright, so इन्होंने कहा था कि एक array treasure के नाम से एक चीज बनाए, declare an array name array treasure for a type treasure chest. treasure chest के नाम से जो हमने मतलब like एक तरह का रिकॉर्ड जो बनाया हुआ है, जो क्लास जो बनाई हुई है, उसके क्लास बेसिकली बनाई हुई है, उसके हिसाब से हम इसको यूज करेंगे. सो नाउ एरे ट्रेजर हमने ले लिया और उसमें से पेन, ये ट्रेजर चेस्ट हमने यूज किया और इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर मैंने इसको कहा है कि आप ऐसा करें, क्वेश्चन कॉमा आंसर कॉमा पॉइंट्स, इन सबको पिकअप करें. अब हम कह रहे हैं कि डेटा डेटा फैक्ट, कोशिश करें कि जो पहले से नाम आ रहे हैं उनको यूज कर लें, जरा सभी टाइप को इसमें प्रॉब्लम करते हैं. रीड लाइन ये हमें याद हो चुका होना चाहिए. क्या हुआ? लेट्स रीड इट और एक दफा और कर लेते हैं, क्यों इसने इसको सही नहीं उठाया. डेटा फैच का हमने यूज किया था. यस, ओके. नाउ लेट्स क्लोज दिस फाइल. And यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग. उसने कहा था कि एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए आप यूज करें, तो हम एक एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा देते हैं, बिकॉज हमने ट्राई से शुरू किया था. एक्सेप्ट आईओ एरर, और फाइनली उसने कहते हैं कि एक पॉइंट हमें दे दें, अप्रोप्रिएट मैसेज होना चाहिए. अगर आउटपुट एन अप्रोप्रिएट मैसेज इफ द फाइल इज नॉट फाउंड, अगर फाइल नहीं मिल रही है तो फिर आप बता दीजिएगा. तो ठीक है, हम इसको बता देते हैं. प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, ये हमने इसको मैसेज दे दिया. ऑलराइट, we have some mistakes over here. Let's find it out.
while के साथ भेज देते हैं। ये मैंने सेमी कॉलन लगा दिया या कॉलन लगा दिया, आई डोंट। See, we have a question or no? You don't have any question right now? अच्छा जी, हमने while के साथ यूज तो किया है, सही यूज किया हुआ है। Let's have it like something like this. This. All right, we have a number of like checkings. तो हम जरा हैंडल कर लें, फिर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसमें और इसको ट्राई करेंगे कि ये कितना अच्छा हमारे लिए परफॉर्मेंस दे रहा है। तो नाउ यस, यहाँ पे जो रीड लाइन था इसको हमने ठीक कर लिया है। यहाँ एक ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा डाला हुआ था, उस ब्रैकेट को हमने क्लोज किया है। दैट्स इट। इसको अब हम कॉपी करें। यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से अंडरलाइन आ रहे हैं। अगर हम इनको स्पेस दे देंगे तो ये प्रॉब्लम्स जो है, ऑल द प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कम होती चली जाएंगी चीजें। प्रॉब्लम तो नहीं है सच, कोई एरर नहीं। ऑलराइट, हमने इसको टोटल यहाँ से उठाया था, पूरा ये कॉपी होगा। 8 मार्क का ये पार्ट था हमारा। एंड लेट्स प्लेस इट इन अवर 3D over here. All right, that's great. Now, next part is the main program repeats each question until the user input the correct answer. अच्छा ठीक है, the number of points awarded depend on the number of attempts before user gives the correct answer. The class treasure chest has a method get question. अच्छा वो get question उसने हमें शुरू में question के दिखाया था, this one, return the question. So what we have to do, that returns a question, write the method get question. अब ये get question का हमने method लिखना है। अच्छा, अब ये get question का method obviously हमें इसको थोड़ा सा समझदारी के साथ लिखना पड़ेगा। ये है तो छोटी सी चीज, लेकिन इसको समझदारी क्या करनी है ये देखें। समझदारी ये है, अब मैं जरा एक चीज करना चाहता हूँ। दिस वॉज 3B था ये, ठीक है। दिस वॉज 3A, हमने हैश करके 3A कर दिया है इसको, ताकि हमें पता रहे कि क्या हो रहा है। अब नाउ 3C जो है, एक्सक्यूज मी, वो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन हमें इन बिटवीन 3A एंड 3B डालना है इसको, ठीक है। ये सॉरी 3A एंड B, या 1 या 2 जो भी उसका नाम है, ठीक है जी। अब बहुत सिंपल सा है, डेफ हमने किया, एक्सक्यूज मी, नाम था उसका गेट क्वेश्चन, GET क्वेश्चन, और
इसका जो है हम इसमें सेल्फ कॉल कर रहे हैं और ये रिटर्न क्या करने वाला है, सेल्फ डॉट क्वेश्चन को ये रिटर्न करना है। सो हमारा इतना पार्ट था इसका, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसी को हम उठा के आगे ले जा रहे हैं। ये बेसिकली पूरा मूव कर जाता है अगर वो कंट्रोल और शिफ्ट आप दोनों को होल्ड किएगा। इधर भी मैं एक 3C और ये 3C का आई है यानी 1। चलें जी, 3CI यहाँ पे लिख रहे हैं। Now, next one is 3C double I, yeah 2. Still प्रोग्राम हमें चाहिए the class pressure test as a method। एक मिनट, ठीक है। Pressure test has a method check answer that takes the user answer as a parameter. It returns true if the answer is correct and it returns obviously false in the otherwise case। Okay, अब जो ये जो काम करना है, ये हमने जो अभी जो जो पार्ट लिखा था बिल्कुल उसके नीचे ही लिखना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना हमने। यानी 3CII जस्ट 3C के नीचे ही आएगा। चेक आंसर के नाम से उन्होंने हमें कहा है कि चेक आंसर के नाम से चीज बनाए, हम चेक आंसर के नाम से बना देते हैं इनको। Try to do it quickly। सेल्फ और इसको आंसर चाहिए था जो हमारे पास आंसर P में आ रहा था। ओके, नेक्स्ट इफ इंटीजर टाइप का था वो उन्होंने हमें शुरू में बताया था। सेल्फ underscore answer obviously, let's check it with the answer P, return true, else का पार्ट लगाते हैं and return false। ठीक हो गया जी, ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, इसको भी अपनी जगह पे प्लेस कर देते हैं।
बहुत इटैलिक में आता है, इस इटैलिक से मैं थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। ऑलराइट, सो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट क्या है भाई? ओके, ये दिस सीम्स लाइक लिटिल बिट ग्रेटर। सो हम इसका ऐसा कर रहे हैं कि इस पार्ट को, बिकॉज वी हैव लाइक लिमिटेड टाइम, तो हम डिस्कनेक्शन के बाद दोबारा आ रहे हैं। एंड देन 4 एंड देन 5। ओके, ये तीन चीजें हैं जो कि 3, 4 एंड this is the third part, and the class treasure chest has a method getPoint that take a number of attempts as a parameter. If the number of attempt is 1, return the value of the point, which is the maximum value probably ना, तो आपने पहली अटेम्प्ट में गैस कर लिया कि आंसर सही है कि नहीं है। If the number of attempts is 2, it returns the integer value of point divided by 2. So whatever the stored number is, जो कि हमारी टेक्स्ट फाइल में, उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। And 3 and 4, obviously we are going to divide it by 4, and if the number of attempts is not 1, 2, 3, 4, it returns 0. So कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला अगर आपने 4 अटेम्प्ट से ज्यादा कर दिए, चाहे कितने भी हों वो। For example, the question is worth 100 points, and the user took 2 attempts to give the correct answer. The user is awarded 50 points. और DIV उसने लगा के हमें दिखाया हुआ है कि देखें हम DIV लगाएंगे। अच्छा, अब DIV लगाना जो है ना, वो यहाँ पे पाइथन में इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। हम विजुअल स्टूडियो वगैरह में DIV लिख देते थे, बट यहाँ पे 2 दफा स्लैश लगाते हैं तो डिवीजन बन जाता है। सो ये पार्ट काफी आसान है। एंड अगेन द थिंग इज के ये आसान पार्ट जो है, ये था हमारे 3 है, डायरेक्ट 3 है। सो 3 नहीं, C का 3 है। सो लेट्स मेक इट लाइक हैश, और ये होगा यहीं पे 3 C 1 2 3 1 2 3, somewhat like this. इसको मिनिमाइज करते हैं। 3 C3, ओके। गेट पॉइंट के नाम से हमें करना है, और ये है हमारा मेथड है। पैरामीटर्स में है कौन कौन से पैरामीटर हैं? टेक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज अ पैरामीटर, तो अटेम्प्ट्स के नाम से पैरामीटर हमारे पास इसमें। एनीवे स्टार्ट करते हैं। कर दिया इसको। गेट पॉइंट्स के नाम से इन्होंने कहा था कि बना दें, हमने बना दिया है। सेल्फ है और अटेम्प्ट्स है। ना ये सिंपल है, इसमें हम कोई एक्सेप्शन एज सच नहीं लगा रहे हैं, हम डायरेक्ट इफ से इसको डील कर रहे हैं। इफ अटेम्प्ट्स is like equals to 1, then return कर दे जो भी डाटा था हमारे पास पॉइंट्स का, ठीक है। और वो हमने ऑब्वियसली इंटीजर में हमने इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं। इंटीजर का फंक्शन लगा हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा जो है वो टेक्स्ट बेस होता है, तो हमें इंटीजर में रिटर्न कराना, बिकॉज वी probably have to, like in some condition probably we need to add it, और इसको पॉइंट्स के साथ हमें करवाना था, तो पॉइंट्स के साथ अब हमने इसको करवा दिया। क्योंकि हम इसमें
बेसिकली इसमें ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, हम बेसिकली इफ देन नहीं यूज करें बल्कि एलिफ यूज करें, विच मीन्स कि हम केस कंडीशन को इसमें यूज कर रहे हैं. else if या elif, same attempts are equal to तो वो रिटर्न कर दे. उसने कहा था कि जो भी आपके पास डाटा है क्या लिख दिया मैंने, TURN लिखना था, रिटर्न कर दें अब आप सेल्फ को. सेम मतलब है पॉइंट्स, और यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दें. एक दफा चेक कर लेते हैं 2 से डिवाइड करने को कहा, यस div 2 है, अगला वाला div 4 होगा. तो ये वाला काम कंप्लीट हुआ. elif attempts, और इसको दो तरीके से चलें. attempts हमें एक ही मेथड यूज करें, इक्वल्स टू. अब किसने कहा था 3 या 4 हो तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा. तो इस जगह हमने लिख दिया 3 और लगाया है attempts इक्वल्स टू 4. अगर ऐसा हो, अब इस जगह में ये कॉलन यूज करना पड़ा. रिटर्न करेंगे सेम इंटीजर बट इस दफा सेल्फ को हमें पॉइंट्स के साथ डिवीजन देना पड़ा 4 का. एक्सक्यूज मी, हाँ सही है, 2 का और 4 का. और इसका हम एल्स डाल देते हैं, फाइनल कर देते हैं इसको. रिटर्न 0 रिटर्न करा दें. ये कोई भी मार्क्स नहीं मिला बेसिकली, तो अभी तक हमने सेव नहीं किया था, सेव कर लिया है मैंने. ऑलराइट, सो अब ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है. ऑब्वियसली कॉपी करेंगे इसको. ये वैसे तो ये स्पेस सही नहीं दिखा रहा, स्पेस हम बना लेते हैं. एक ही पेज पे रीडेबल हो, ये ज्यादा अच्छा रहता है. ऑलराइट, सो ये पार्ट हमने कंप्लीट किया. नाउ दिस इज 4 एंड 5 में स्क्रीनशॉट चाहिए और 4 में प्रोग्राम कोड चाहिए. 4 में वो कहते हैं कि राइट प्रोग्राम कोड फॉर द मेन प्रोग्राम टू कॉल प्रोसीजर read data. अच्छा, ask the user to enter a question number between 1 and 5. Output the question that match the question number entered by the user if the answer input by the user is correct using the method check answer. Repeat the question until the user input the correct answer. ठीक है, and count how many times the user attempt the question
अच्छा खासा काम यहाँ पे होने वाला है. Use the method getPoint to return the number of points awarded, output the number of points. Okay. तो काफी काफी कुछ काम आप देख रहे हैं कि इसमें है हमें. Alright. So let's begin with this one. ये थोड़ा सा काम है इसमें. अच्छा, अब ये जरा से देखना पड़ेगा कि हमने रीड डेटा के नाम से रीड डेटा हमने कहाँ बनाया था? रीड डेटा हमने यहाँ बनाया था. तो बेसिकली जब हमने रीड डेटा यहाँ बनाया तो इसके नीचे काम करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि उसने रीड डेटा को कॉल करवाया है. कॉल द प्रोसीजर रीड डेटा. और कॉल कराना प्रोसीजर को तो कुछ भी नहीं होता, आपने सिर्फ नाम लिखना है और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करा देने, तो ये कॉल हो जाता है. अच्छा, तो हम रीड डेटा को कॉल करा लेते हैं. आ गया. नाउ नेक्स्ट बात उन्होंने कह दिया, आस्क द यूजर टू एंटर द क्वेश्चन नंबर बिटवीन 1 and 5. तो बेसिकली वी आर आस्किंग फॉर like a choice from the user. हमने एक choice के नाम से एक variable ले लिया है और choice तो उसने कहा था कि उसमें 1 to 5 पूछे. तो 1 to 5 बेसिकली एक इंटीजर नंबर है. इसमें मैंने इनपुट भी करवाना है यूजर से और उससे कहना है कि ask the number, ask the question number between 1 and 5. Okay, so तो मैसेज दे देते हैं. enter between 1-5 ऐसे कर देते हैं इसको. कंडीशन लगा देते हैं फौरन ही. अगर चॉइस जो अभी हमने ली है, तो इट इज लाइक ग्रेटर देन 0 एंड. अच्छा, अगर मैं एंड के बाद लेस देन या लेस देन 6 लिख भी दूं तब भी चलता है. बट बहुत अच्छा ये है कि हम यहाँ पे चॉइस इसको मेंशन कर दें. सो इफ इट इज लाइक ग्रेटर देन 0 एंड, तो क्या करें? Basically, अगर if the choice is greater than 0 and the choice is less than 6, तो हमें रिजल्ट दिखाना है. अच्छा, रिजल्ट डिपेंड करता है कि वो यूजर ने उधर रिजल्ट के अंदर किया हुआ क्या है. मतलब उसने कितने अटेम्प्ट्स में काम किया हुआ है, ये हम पहले देख चुके हैं. ठीक है ना, पहले अटेम्प्ट में किया है तो उसका आ जाए, दूसरे अटेम्प्ट में किया है तो उसका आ जाए. फिलहाल मैं इसको फॉल्स करा रहा हूँ. और एक सिंपली while अटेम्प्ट्स को चेक करवा लेते हैं. चेक क्या करवा लेते हैं, अटेम्प्ट को हम फिलहाल 0 करवा रहे हैं. अब डेटा पिकअप करवाएंगे while, मतलब के हुआ क्या था वहां ऊपर, क्या हुआ. रिजल्ट इज, ये हमारे while के अंदर जाने का तरीका था, ये जो ऊपर की चीजें हुई.
RESULT सही तो लिखा। ओह ग्रेट, थोड़ी सी बारिश चल रही है, शुरू हो गई है बारिश। तो वाइल के अंदर हमने बेसिकली चेक करवाना है अपने आंसर को। एंड एज यू नो कि हमें इसको कन्वर्ट कराना पड़ता है बार बार। डेटा को हमने एक एरे में डलवाया था, और उसका नाम था एरे ट्रेजर। लेट मी हैव टू चेक इट कि इसने खुद से क्यों नहीं पिकअप किया। TREASURE एरे ट्रेजर, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। और इसकी हम चॉइसेस पे चले जाते हैं। डॉट गेट करवा लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने करवाया था। That's it. ARRAYTREASURE, seems like okay। एक मिनट जरा होल्ड करें। ऑलराइट, आंसर्स तो हमने कर दिया है। रिजल्ट को भी चेक करवा दें। एरे ट्रेजर प्राइस 1 डॉट आंसर चलें आने दें। Attempts equals to, ये सिंपल है। And then we are going for the while statement, print integer treasure price on
get points, and again attempts. चलिए, अब ये वाला काम हमने कंप्लीट किया। एक नजर मैं इसको फिर से देख लूं। रिजल्ट को हमने फॉल्स करवा दिया था। यहाँ पे हमने इसकी वाइल के साथ चेकिंग कराई। रिजल्ट RESULT की is still undeclared कह रहा है। एरे ट्रेजर को वी हैव टू फाइंड इट आउट कि इसको क्या तकलीफ है। एरे ट्रेजर ARRAT नहीं है, वाई है। पर भी देख लें कहीं हमने ऐसी कोई सिली मिस्टेक ना की हुई हो। Seems like okay. सेव कर लेते हैं इसको कॉपी कर देते हैं एंड देन हम फाइनल स्टेजेस पे चले जाएंगे इसके। अब इसलिए हमें इसके स्क्रीनशॉट्स को देखना है और अगर कोई इसमें ट्रबल है तो उसको फाइंड आउट करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। नाउ what we have to do is to check it now, as we have added two different things. There was a problem with this array. Question number 3B, इसमें यहाँ पे array treasure हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, तो इसको ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर दिया और उसमें हमने बता दिया कि ब्लैंक एरे अभी हमने क्रिएट किया, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारी फाइल है ट्रेजर चेस्ट डेटा की, उससे डेटा पिकअप होगा और फिर वो आएगा। वी नीड टू टेक केयर ऑफ वन और टू थिंग्स एज वेल कि अगर हम क्लास में काम कर रहे हैं तो इसी क्लास के अंदर जो है वो हमने बाकी डिक्लेरेशन देने हैं, और ये ऑब्वियसली हम कॉल आउट कर रहे थे तो इस क्लास के अंदर नहीं है, सो हमने डेटा को कॉल किया। ये तो लाइक जो मॉड्यूल है या प्रोसीजर है हमने इसको यहाँ पे बना लिया, और नीचे जो है उसको कॉल आउट करके बाकी सारी चीजें इंटैक्ट हैं वैसे ही हैं जो कि हमने प्रोग्राम में लिखी हुई। सो 2 lines are did and some indentation work is done. Now let's check it out if it is going to work, but before we are going for it, हम जरा क्वेश्चन को देख लें। Does the program take a screenshot showing the inputs and the output for each of the following 2 tests? In the first test, select question number 1 and answer it correctly the first time. So let's run it. उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 को सिलेक्ट करें, हमने यहाँ पे मैसेज दिया हुआ था 1 to 5 का। 1 हमने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट हुआ और उसने पूछा 2 × 2 क्या होता है, तो ऑब्वियसली 4 होने वाला है और हम इसको आंसर कर देते हैं। सो 10 हमें पॉइंट्स इसके मिल गए। सेकंड वी हैव टू रन इट ऑब्वियसली, बट उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 को सिलेक्ट करें एंड करेक्ट इट सेकंड टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। तो ये हमें वहाँ शो करना है स्क्रीनशॉट। अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में जाते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं।
2 sets of data थे, यहाँ पे हमें लगाने. The first one, we don't go for के हम इसको किसी और तरीके से नहीं, ये image ही रहना चाहिए. And the second part is now, which is run it again with 5. और इसका आंसर फर्स्ट टाइम में हमें सही नहीं देना है, सेकंड टाइम में सही देना है, ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. सो ये वैसे 7,000 बनता है, मैं 6,000 डाल देता हूँ. इसने रीजनरेट किया क्वेश्चन को और दोबारा आंसर कह दिया है क्या आंसर करें. सो वी आर गोइंग फॉर 7,000 द करेक्ट आंसर. It is basically sending us the answer कि जी आपका 9 आपका रिजल्ट होना चाहिए. Let's take the screenshot and we'll find it out कि ओरिजिनल हमारे पास इसके मार्क्स जो पॉइंट्स मिलने चाहिए थे वो कितने थे और हमें 9 मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने सेकंड टाइम इसको कंप्लीट किया. फर्स्ट टाइम में हमने मिस्टेक करवाई गई है, हमने मिस्टेक कर दी. हाउ टू फाइंड इट आउट? ऑब्वियसली हमें जस्ट जो टेस्ट डेटा है अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा. एक्सक्यूज मी, टेस्ट नंबर 5 को हमने देखना था. 18 उसके पॉइंट्स होने चाहिए थे, 7,000 उसका करेक्ट आंसर था और वो हमने सेकंड टाइम में किया तो वो 9 आंसर आ रहा है जैसे कि हमने अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर अभी देखा. सो डिवाइडेड बाय 2 का जो कॉन्सेप्ट था जो कि हमने ऊपर किया है ये अप्लाई हो रहा है. अगर मैं 3 या 4 दफा गलत अटेम्प्ट करने वाला हूँ तो डिवाइडेड बाय 4 होगा और ये ऑब्वियसली हमसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है इस वक्त, सो हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं. यहाँ हमने थोड़ा सा एडिशन किया प्रोग्राम के अंदर, सो विल हैव टू लाइक अप्लाई इट. और वो एडिशन जो है वो बहुत ही माइनर सा था. यही 2 लाइंस जो कि इस वक्त हाईलाइट हुई हुई थी, कॉपी इट एंड पेस्ट इट. मैं इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी देखनी पड़ेगी या तो फिर ये हमने एडिशन किया था अपने प्रोग्राम में एंड the rest of the things are simple. So let's save it and this is the final version of our paper. Hopefully आपने अंडरस्टैंड किया होगा. इसके और भी फॉर्मेट्स बन सकते हैं, मल्टीपल तरीके से इसको किया जा सकता है, बट दिस इज द वन जो कि हमारे पेपर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 100% सेम होगा. That's all for this paper. We'll come back for the another one inshallah shortly. Allah Hafiz.